Ladies and gentlemen, Honorable Chief Minister, our chief guest is now with us. Let's give him a standing ovation and a huge round of applause. Thank you so much. जोरदार तालियों की गूंज से स्वागत कीजिए हमारे समक्ष उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट जी और हमारे डिग्निटरीज का. Let's keep applauding for our guests and dignitaries, please. आपका हार्दिक स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. You all in Himachal Pradesh Climate Change Conclave 2021, Manthan Himalaya, with motto Secure Himalaya, leading to safe India. Indian Himalayan region is one of the most vulnerable regions from climate change point of view. We can all see and observe huge disasters, flash floods, landslides, melting of glaciers due to current greenhouse gases and global warming in entire Himalayan region. Respected sir, today under your leadership, we all have assembled here to deliberate and discuss a roadmap for our future generations, which will lay a foundation for climate resilient Himalaya, which ensures safety and social security. Both Saxena ji, Additional Chief Secretary, Environment Science and Technology, Himachal Pradesh, Shri Ashish Tiwari ji, Secretary Environment and Climate Change, Government of Uttar Pradesh. A huge round of applause for our guests. We are honored by their gracious presence. माननीय अतिथिगण और दोस्तों, ये शुभ कार्य शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेना सर्वोपरि होता है. तो आइए इसी खूबसूरत परंपरा को नजर में रखते हुए दीप प्रज्वलन करें. Now we will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as an attribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. Lampen Beleuchtung. So I would like to request our respected dignitaries on the dais to please and lighten up the lamp. Miss Monica may felicitate the candle to our guests. A huge round of applause for our guests, please. Following this great tradition, there is a famous saying, Asato mam sadgamaya, tamso mam jyotirgamaya, mrityu mam amritam gamya. It is like, lead us from the path of untruth to truth, from darkness to light, from death to moksha. So this is the essence of lamp lighting. मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी, असतो मम सद्गमय, तमसो मम ज्योतिर्गमय, मृत्यु मम अमृतम गमय. Thank you so much. जोरदार तालियां हमारे आज के dignitaries और हमारे guests का. Thank you everyone. You may now take your seats. जोरदार तालियां हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी के लिए. Thank you sir. Thank you so much. Now I would like to request our chief guest honorable chief minister Shri Jairam Thakur ji to kindly present a gift of appreciation to Ambassador of Germany to India, Mr. Walter J. Linner. I would also request additional chief secretary Shri Saxena ji to kindly assist him. Zordar taaliyan hamare German ambassador to India, Mr. Linner ke liye. Herzlich willkommen sir. It is a pleasure having you with us, sir. A huge round of applause for our German ambassador to India. Thank you so much for being here. Thank you so much. Ram Subhag Singh ji, Chief Secretary, Government of Himachal Pradesh. Shri Kamal Kishore ji, Member Secretary, National Disaster Management Authority, who is Acting Director General of Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. Dr. Akhilesh Gupta ji,
Sonam Bangchuk-ji, Director, Students Educational and Cultural Movement of Ladakh, would be joining us virtually online. We are thankful for this sweet gesture of his. Resilience in Himalayas will lead to security of not just Himalayas but the entire country. जो हिमालय में होगा उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। तो जो जिम्मेदारी, जो नेतृत्व आपने दिखाया है, उसके लिए उसका लाभ सिर्फ हिमाचल को नहीं होगा, सिर्फ पर्वतीय राज्यों को नहीं होगा, पूरे देश को होगा। क्योंकि हमारे इकोसिस्टम्स, हमारे एनवायरमेंटल सिस्टम्स, हमारी नदियाँ, ये सब कनेक्टेड हैं। और जब ये कनेक्टेड हैं तो अगर पर्वतीय राज्य जिम्मेदारी से अपने पर्यावरण को संभालेंगे तो इससे लाभ सभी का होगा। पर्वतीय राज्यों का दर्द समझा जा सकता है। मैंने खुद उत्तराखंड में काम किया है। जो चीज आप मैदान में बनाते हैं उसी को अगर आप 10,000 फुट पे, 5,000 फुट पे और बनाएंगे तो उसकी लागत बढ़ जाती है। There are issues of connectivity, there are issues of communications in hill states. So all of those challenges are there. और जो पिछले कुछ सालों में हम देखते आ रहे हैं, जो समस्या है सबसे बड़ी, जो क्लाइमेट चेंज से भी संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से भी संबंधित है, वो है कैस्केडिंग डिजास्टर्स की। कि एक ब्लॉक हुआ, ब्लॉक से नीचे फिर एक रिवर ब्लॉक हुआ, रिवर ब्लॉक होने के बाद नीचे फ्लैश फ्लड हुआ। जो हम विज्ञान और तकनीकी की सहायता से जो मॉडलिंग करते हैं, हम अर्थक्वेक for our lack of accountability, for our we can say some of the misdeeds, we try to take the shelter or the excuse in the name of climate change. For example, if we have carried out the land use flaws in our cities, if we have manipulated the landscapes in our cities and the mountain areas, and if something happens wrong, many times we try to take refuge under the name of climate change. So that is also a name of caution, that we should also try to have a clear distinction that what is the baseline vulnerability and what is the aggravated vulnerability by the climate change. So even when there is no impact of climate, the wisdom in this hall, in this wonderful place, and really delighted to be among you all discussing issues that we should be discussing around these trying times. And I'm grateful for Himachal Pradesh government for organizing such a platform to bring people together to discuss such crucial issues. Himachal Pradesh is one of my favorite states. It's so quiet and yet so effective, doing so well on almost all development indexes, yet so quiet. And for me, it's a special place because The German Ambassador to India, Mr. Walter Miller, and all of the citizens. The Centre will lead to strengthen institutional knowledge and climate change in future. The Centre will be set up under the financial and technical support from Government of Germany through GIZ. Thank you very much. A huge round of applause. Now again I would request Honourable Chief Minister to please unveil Himachal Pradesh State Action Plan on Climate Change version 2 roadmap for 2021 to 2030, which is for the next 10 years. Thank you so much. Many congratulations on unveiling the Himachal Pradesh State Action Plan on Climate Change version 2. A huge round of applause. Congratulations. We are thankful to you for having spared your worthy time to such an important part of the event. Ladies and gentlemen, it's time to hear from our German Ambassador to India, Mr. Walter J. Miller. Ich möchte Sie auf der Bühne begrüßen und ein paar Worte der Erleuchtung sagen.
I would welcome you all here and share a few words about the initiatives being undertaken in India under the bilateral cooperation between Government of India and Government of Germany. Thank you very much. Huge round of applause. Sir. Honorable Chief Minister Thakur, Honorable Chief Secretary, members of the DICE, all the secretaries, member secretaries, additional secretaries, ladies and gentlemen, and it's good to be here. Namaskar. मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन Rakat Karadu, yani Hindi Sikarahu, उम्मीद है कि एक दिन मेरी हिंदी बहुत अच्छी होगी. But this is not yet the case, so I will be in English, so it's better for you and me. It's good to be here. It's my first time in Sri Lanka, and it's a pleasure to see so many people attending this conference. It shows the interest of you all, of the world, in fact, of the topic at hand. When I got the invitation to come to this conference, apart from it is co-organized by the German GIZ, I thought it's worth coming. It's worth coming by car. I went all the way, my brother did, but I was sitting. Minister of Himachal Pradesh, Mr. Jairam Thakur ji, to share his virtuous thoughts. आपका हार्दिक स्वागत है सर. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी का. धन्यवाद. आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच में ऑनरेबल जर्मन एम्बेसडर मिस्टर वाल्टर गेलियर जी, चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश श्री रामसुभाष जी, प्रसन्नता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज ये 2 दिन की चर्चा यहाँ पर एक शुरू हो रही है. मैं आप सभी का हिमाचल देवभूमि में आने पर यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ. और मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस दृष्टि से भी है आज की तारीख में, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश, हमारे प्रदेश के सामने एक इस प्रकार की आ गई है जिसका सामना करने के लिए हमको समय पर ही तैयारी करनी उचित होगी. और उस दृष्टि से इस कार्यक्रम का यहाँ शिमला में करना, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो पहाड़ के राज्य हैं जिसमें हिमाचल जैसे एक प्रदेश है जहाँ पर ग्लेशियर बनते हैं, ग्लेशियर बनने के बाद पिघलते हैं. और हम भी इस बात को देख रहे हैं, बहुत करीबी से देख रहे हैं कि पिछले अरसे से लगातार ग्लेशियर कम होता है. और उसकी वजह यहाँ उससे पहले भी यहाँ पर चर्चा हुई और आप लोग भी सारी चीज को लेकर के जो क्लाइमेट चेंज हो जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट जो है वो पूरे विश्व पर इस तरह से पड़ रहा है, उसका एक परिणाम है. मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति में जब हम ये मान करके चल रहे हैं कि आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, और इसके लिए हम अपने आज के इस दौर में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कुछ किस तरह से साइंटिफिक तरीके अपना सकते हैं ताकि आने वाले समय में ये जो चुनौतियां हमारे सामने आई उसका हम सामना करने की परिस्थिति में हो सके.
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारे अनुभवी लोग यहाँ पर हमारे बीच में आए हैं और ये हमारे लिए आप सबका अभिनंदन करना, स्वागत करना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है उस दृष्टि से। और जलवायु परिवर्तन तो स्वाभाविक रूप से उसके कारण भी पर्यावरण में प्रभाव पड़ रहा है, पॉपुलेशन के कारण भी प्रभाव पड़ रहा है और अल्टीमेटली इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है, इम्पैक्ट वहीं आ रहा है जहां से जो हमारे ये हिमालय है, जितने भी हमारे पहाड़ है, जहां पर ग्लेशियर है, जो ग्लेशियर जो है पूरे साल भर अपनी जो है वो एक स्थापित व्यवस्था के अनुसार, यानी कि ग्लेशियर बनने के बाद वो धीरे धीरे जो है वो पानी छोड़ता है। उस पानी से जो है हमारे सारे देश के लिए, दुनिया के लिए जो है वो नमी मिलती है, सिंचाई के लिए पानी मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है। वो ग्लेशियर अगर समाप्त हो और आपको हिंदी बोलने में कठिनाई होती है, हमको अंग्रेजी बोलने में कठिनाई होती है, तो ये बराबर है, एक तरह की बात। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी विदेश नहीं गया था और मुख्यमंत्री बनने के बाद ही विदेश गया और पहली कंट्री जहां मेरा विदेश जाना हुआ तो जर्मनी का फर्स्ट कंट्री वेयर आई विजिटेड। और उसके बाद वहां हमने देखा कि वहां का पर्यावरण, वहां का सारा, वहां के पहाड़, वहां का सारा टोपोग्राफी बहुत ज्यादा मेल खाती है हिमाचल से, बहुत ज्यादा मैच करती है। लेकिन एक चीज है वो समुद्र का किनारा भी साथ में है और हमारे यहाँ पर पहाड़ होते तो समुद्र का सवाल पैदा होता नहीं। और वहाँ जहाँ फ्रैंकफर्ट में रुके थे, मैं कह रहा था कि हम जब इस होटल में रुके थे, फ्रैंकफर्ट का जो एयरपोर्ट है वो बहुत बिजी एयरपोर्ट है, पूरे देश के, दुनिया के सबसे बिजीएस्ट जो एयरपोर्ट में से एक है। और हम वहां से सामने से देखते थे एक साथ जो प्लेन के जो लैंडिंग के लिए जो वो लाइन बनती थी, एक प्लेन के बाद दूसरा, तीसरे, यानी कि 6-7 प्लेन एक साथ जो है वो सामने जो है वो लैंड करने के लिए जाते थे। वो बड़ा बहुत सुंदर दृश्य था वहां पर। मैंने अपने इसमें जो सफलता हासिल हुई। एक बार फिर से आप सभी का मैं यहाँ आज के इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, सामयिक विषय इसको मैं कह सकता हूँ कि आज की तारीख में इस विषय का बहुत बड़ा महत्व है कि ग्लेशियर कम होता दिख रहा है, पिघलता हुआ ग्लेशियर तेजी से गायब होता दिख रहा है और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हिमाचल के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। और ऐसे में ऐसे विषय पर आज चर्चा करना बहुत आवश्यक है और उसके माध्यम से समाधान की दृष्टि से सॉल्यूशन इसमें अगर निकलते हैं तो मुझे लगता है कि वो हम तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वो कम्युनिटी तक नीचे जाना चाहिए, क्योंकि सब लोगों के व्यवहार में जब चीजें हम पहुंचाने की स्थिति में हो पाएंगे तभी जाकर के ये सफल हो पाएगा कि हम जो है वो इस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को थोड़ा रोक सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए वो सबको काम करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी खूबसूरती से आपने हमें बातें बताई हैं, हमसे साझा की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मानती हूँ कि जर्मनी इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंट्रीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर योर influential words. This was such a great elaboration on some important topics. Thank you so much. Now request Mr. Kamal Kishorji, Member Secretary, National Disaster Management Authority, who is Acting Director General of Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, to give his address before the participants. A huge round of applause for sir, please. नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, नमस्कार Ambassador, His Excellency Mr. Linden, Chief Secretary
सेक्रेटरी साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और पर्यावरण विभाग के हमारे कॉलीग्स, आपदा प्रबंधन विभाग के हमारे कॉलीग्स, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आपने एनडीएमए को इस कार्यक्रम में बुलाया और हमें मौका दिया आपके साथ कुछ डिजास्टर्स को जोड़ सकें। जो अनिश्चितताएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जो इम्पैक्ट पड़ रहा है पर्वतीय राज्यों पे वो बहुत डिस्प्रपोर्शनेट है, उस अनुपात में नहीं है जिस अनुपात में वहाँ की जनसंख्या है। तो आज समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने 6 आइडियाज प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 6 things that mountain states, the Himalayan states should do in order to manage climate risk, in order to manage disaster risk. मैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से आता हूँ तो जाहिर है कि मेरा जो अपना जो दृष्टिकोण रहेगा वो आपदा प्रबंधन से ज़्यादा रहेगा। तो पहली बात तो ये कि हमारे जो पर्वतीय राज्य हैं, डिजास्टर प्रिवेंशन तो जरूरी है ही, लेकिन डिजास्टर रिस्पॉन्स में उनमें सब में एक मिनिमम कैपेसिटी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है हम उसको ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बाय डिफॉल्ट लोकल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बन गई है देश के कई इलाकों में, और ये प्रैक्टिकल नहीं है, खास करके पर्वतीय इलाकों में, क्योंकि एनडीआरएफ कितनी भी एफिशिएंट हो जब तक वो पहुंचेगी देर हो चुकी है। तो हर राज्य में स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होनी चाहिए। ये लग्जरी नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है। तो ये पहली बात मैं कहना चाहूंगा। और इसमें एनडीआरएफ की तरफ से हम आपको सहायता ये कर सकते हैं कि एनडीआरएफ मेंटरिंग सपोर्ट प्रदान करेगी, एनडीआरएफ ट्रेनिंग करेगी, एनडीआरएफ प्रेरणा देगी, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो इंस्टीट्यूशनल तौर पे वो हमेशा एसडीआरएफ का होना चाहिए और हमारे सारे पर्वतीय राज्यों में एसडीआरएफ जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम एसडीआरएफ भी बना रहे हैं तो जो पर्वतीय राज्य हैं, कनेक्टिविटी के जो इशू है, कम्युनिकेशन का जो इशू है, वो देखते हुए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एसडीआरएफ भी नहीं हो सकता। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस विल ऑलवेज बी ए कम्युनिटी। हमेशा हर गांव, हर कस्बा, हर छोटा शहर, उसके अंदर इस प्रकार की क्षमता होनी चाहिए कि वहां कोई आपदा आए तो सबसे पहले वो रिस्पॉन्ड कर सके। Extend a vote of thanks to all dignitaries, speakers and participants for their kind presence in this conclave on climate change to lead Himalaya Surakshit Bharat, secure Himalayas safe. पीछे